Hello, everybody. Welcome to EduTap. I hope you guys are doing absolutely good. So, today, finally, after PFRD Phase 2 analysis, we are meeting again for IFSC Grade A Phase 1 analysis, wherein I have my full team with all of you, wherein we will discuss all the nitty-gritties of Paper 1 and for Paper 2 as well. But please understand that this is an initial reaction. Our faculties member have talked to limited section of people, and whatever we are going to tell you, take it as a pinch of salt. Do not take it that much seriously. But let's start with the session first with Vishnu sir. विष्णु सर, ओवरऑल एनालिसिस कैसा रहा है सर अभी तक क्वांट और रीजनिंग का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फेज 1 पेपर 1 के लिए। पेपर मॉडरेट लेवल पे ही है सर। ठीक है। और जैसी जैसी चीजें हम दूसरे एग्जाम्स में हमने देखी थी वैसी यहाँ पे भी पूछी गई। हम्म सिमिलर जैसा पीएफआरडी का पेपर था हम्म हम्म फेज वन वैसा हम्म। ही सब कुछ देखने को मिला है यहाँ पे। राइट सर, कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस अगर आप डिस्कस करना चाहे तो। सबसे पहले अगर क्वांट की बात करें तो नंबर सीरीज के चार हम्म क्वेश्चन है। मिसिंग नंबर सीरीज है, आसान ही लॉजिक का, ज्यादा मुश्किल नहीं है। हम्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 6 क्वेश्चन है, सिंपल इक्वेशन देके रूट्स निकाल के हम्म कंपेयर करना। तो हम्म। 10 क्वेश्चन तो यहीं से है, मतलब बहुत आसान है। ठीक है। राइट। फिर एक डीआई है जिसमें 6 क्वेश्चन थे। और हम्म। एक टेबुलर डीआई है जिसमें रेशियो और बेसिक कैलकुलेशन का यूज हो हम्म रखा था। उसके बाद हम्म बाकी के जो 9 क्वेश्चन है वो अर्थमेटिक के टॉपिक्स पे हैं। अलग अलग टॉपिक्स पे, जैसे प्रॉफिट लॉस पे क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क पे, सिंपल हम्म इंटरेस्ट पे, पार्टनरशिप, हम्म मेंसुरेशन, एवरेज, इनकम एक्सपेंडिचर, बोट एंड स्ट्रीम, नंबर बेस्ड हम्म है। तो जो ये 9 क्वेश्चन है इनमें से दो तीन क्वेश्चन थोड़े लेंदी हैं। हम्म। अदरवाइज बाकी मतलब एक बच्चा डुएबल था कि आराम से ठीक ठाक स्कोर कर सकता था इसमें, एंड सर क्वांट आई वाइज। थिंक आईएफएससी में क्योंकि पेपर 1 की कट ऑफ 30 ही आती है, तो आई हम्म। थिंक उसको आराम से क्वांट और बहुत रीजनिंग। आराम से, मतलब हम बार बार बोलते हैं कि जैसे हम्म जो आरबीआई को छोड़ के बाकी रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम है हम्म वहां पे अगर आप नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज रेशियो, डीआई कर लो तो ठीक ठाक स्कोर आ जाता है। तो राइट सर। यहाँ पे भी तो 16 क्वेश्चन आपके आउट ऑफ 25 इन्हीं 5-6 टॉपिक से। राइट एंड सर एनीथिंग अबाउट रीजनिंग नाउ। रीजनिंग में पजल और सीटिंग अरेंजमेंट का जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो हम्म हर साल की तरह बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम्म। भी हमने टोटल 18 क्वेश्चन इन्हीं से देखे हैं 25 में से। ठीक है। वाओ। जिसमें सिटिंग अरेंजमेंट में दो हम्म अरेंजमेंट हैं जो हम बार बार बताते भी है कि यही ट्रेंड में है, वही पूछी गई। जैसे एक अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन वाली है जिसमें टोटल 15 पर्सन थे और नॉर्थ फेसिंग थी, 3 क्वेश्चन है। एक सर्कुलर अरेंजमेंट है जिसमें 4 पर्सन इन सॉरी नंबर ऑफ पीपल बताए गए हैं 8 है, लेकिन इनसाइड आउटसाइड कहाँ देख रहे हैं ये नहीं बताया गया था। और दो बक्स पजल है, एक बॉक्स वाली पजल है और एक मंथ और डेट का कॉम्बिनेशन है। तो टोटल राइट 18 क्वेश्चन तो यहाँ से है। और इसके बाद 3 क्वेश्चन इनइक्वालिटी के हैं, सिंपल हैं थोड़े से। स्टेटमेंट लेंदी दे रखी थी लेकिन कंक्लूजन आसान दे रखे थे। और उसके ओके। बाद कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन है, लेकिन ये लॉजिक बेस्ड है। एक अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से क्वेश्चन है और दो क्रिटिकल रीजनिंग से भी क्वेश्चन है। एक स्टेटमेंट अजम्पशन वाला है और एक आर्ग्यूमेंट पे बेस्ड है। ओके। सो ओवरऑल एनालिसिस सर रीजनिंग का कैसा है, मतलब टफ है पेपर, ले मॉडरेट है? नहीं, क्वांट के मुकाबले में लेंदी है सर, क्योंकि बच्चा ओके। आमतौर पे सीटिंग अरेंजमेंट और पजल्स कम करके जाता है, तो उस लिहाज से मतलब उनको थोड़ा मुश्किल लगा होगा। बट जिसने नॉर्मली, मैं ये नहीं बोलूंगा कि हमने, यार ये जनरल ट्रेंड है। आईबीपीएस पूरा साल एग्जाम लेता है, तो उस ट्रेंड में जो भी चीजें चल रही होती हैं वो हम बार बार डिस्कस करते हैं वीडियोज में। तो उसी ट्रेंड में से पजल और अरेंजमेंट है। ऐसा हम्म, नहीं है कि कोई अलग से ही कुछ पूछ लिया हो। बट हाँ, ठीक है। लेंदी लगेगा थोड़ा सा पजल और राइट। अरेंजमेंट के नजरिए से। बट सर किसी को अगर डिजायरेबल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अपने पूछने हो आपसे कि गुड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स क्या हो सकते हैं, तो व्हाट विल बी योर आंसर इन दिस? अगर क्वांट की बात करें सर तो समवेयर 12 to 15 तो इजीली हो सकता था, क्योंकि नंबर सीरीज क्वाड्रेटिक की 10 क्वेश्चन है। ओके। उसके बाद आपने अगर 3-4 क्वेश्चन भी कोई भी अटेम्प्ट किए, अगर डीआई किए तो 16 हो गए। अगर बाकी में से किए हैं 2-3 तो भी 12-13 हो गए आराम से। राइट, सो ठीक है। ओवरऑल एनालिसिस ये निकल के आ रहा है that quant is moderate, reasoning is bit lengthy, but लीजन if we बेट लेते if we see that we have to get just 30 marks in paper 1, then it is doable क्योंकि quant से डुएबल आप 10 से बहुत, आराम से हो हाँ। जाएंगे, राइट? रीजनिंग में बच्चे ने किए भी होंगे कम अटेम्प्ट, लेकिन ओके। अगर सपोज एक पजल अरेंजमेंट कुछ भी अटेम्प्ट किया होगा और इनइक्वालिटी के 3 क्वेश्चन बहुत इजी थे, तो समवेयर 10 के अराउंड वो रीजनिंग में भी
कर सकता Oh, था आराम से। okay. Right, sir. Anything else to add, sir, so that I can move to Narveer, sir? Any ending comments? एंडिंग कमेंट यही है कि जो चीजें बताई जा रही हैं आपको अच्छे से गाइड किया जा रहा है हमारे इस चैनल के थ्रू, और जो चीजें हम बता रहे हैं वही उसी लाइन पे पेपर है, और अभी सेबी का एग्जाम आ रहा है आगे, तो ये जो एनालिसिस है ये बड़ा यूजफुल होने वाला है बच्चों के लिए सर। Right, sir. Thank you so much. Now I will take Narveer, sir, in the picture. Narveer, sir, what is your overall analysis for the English component of Phase 1, Paper 1? So English also was on the, I mean, moderate side, not very difficult. 25 questions on English. आरसी पे 10 क्वेश्चन आए थे, लेकिन आपके पास छोटे क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने को मिले हैं। मतलब इफ somebody is good at vocabulary और जिसने प्रैक्टिस किया है ना, he can score really high in English. आपको Right, sir. कॉम्पिटिशन पे 10 क्वेश्चन देखने को मिले। कोई दो ऑथर्स थे जिन्होंने एक बुक लिखी थी, इस पे बेसिस पे एक पैसेज था, उस पे अंदर जो आइडियाज थे, मतलब जो उस बुक का वो है ना, प्रोलोग होता है, उसको वो दिया हुआ था। and उसके ऊपर उन्होंने कुछ वर्ड बड़े सिंपल से, जैसे इम्यून, टर्म, ऐसे ऐसे वर्ड्स बोल्ड करके वोकैबुलरी में पूछे थे, और 3 फिल इन द ब्लैंक्स थे उसी के अंदर। Okay. सो सो आरसी वाज फॉर 10 मार्क्स। बट ओवरऑल अगर मैं बात करूं, बाकी जो क्वेश्चन है वो बहुत ही, मतलब यू कैन से कि बहुत ही इजी रहे हैं एज कम्पेयर टू एनी अदर एग्जाम। कोई भी रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से अगर हम Right, कंपेयर करें, तो इट इज ऑन द इजियर साइड। सेंटेंस right. करेक्शन के उन्होंने आपकी बार 2 क्वेश्चन पूछे। उन्होंने फॉर एग्जांपल 5 स्टेटमेंट दी हुई है और उन्होंने पूछा इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। Hmm. सो ये 2 क्वेश्चंस ये आए थे। फिर आपको 4 क्वेश्चन आए थे गाइस, ये फ्रेज और वर्ड रिप्लेसमेंट के ऊपर। आपको एक फ्रेज बोल्ड करके दिया हुआ था, उसकी रिप्लेसमेंट पूछी थी। 3 क्वेश्चन आपको वो सेंटेंस रीशफल जो होता है ना सर, एबीसीडी वाला, एक सेंटेंस को 4 पार्ट में ब्रेक किया हुआ है, उनको रीशफल करना, इजी वाले बिल्कुल आए हुए थे 4 क्वेश्चंस। फिर 2 क्वेश्चंस आपके वर्ड यूजेज पे आए थे। आपको एक 2 वर्ड दिए हुए थे, उनसे पूछा था कि नीचे गिवन 2 सेंटेंसेस या 3 सेंटेंसेस में से वो किसमें सही करेक्टली यूज्ड है। और 4 क्वेश्चन आपके डबल फिलर्स के आए थे, विच वर ऑन द इजियर साइड। तो Right, ओवरऑल sir. अगर हम बात करें तो दिस मेक्स 25 क्वेश्चंस, और डुएबल था, मॉडरेट था। इफ somebody has practiced well, I think should be able to target at least 18 to 20 questions in, in the given time. So that 18 to 20 is a very good attempt, sir. It's very high attempt out of 25, isn't it? The paper is easy, sir. It was doable. Okay. Okay. So I think, sir, seeing that you only need to get 30 in Hmm, paper 1 of IFSCA, English and Quant would have made your day, right? absolutely. Because Quant was also like moderate, English is also doable. So यहीं से आपका ओवरऑल कट ऑफ अगर देखा जाए पेपर 1 का क्लियर हो सकता था, Right. right? Thank you so much, sir, for English analysis. Now I will like to move ahead to Devanshu, sir. Devanshu, sir, as we have seen in quant and reasoning and in English, although a student who would have left current affair, he would have still be able to clear the cutoff, right? So, sir, current affair में कैसा पेपर आया है? First of all, the first question is this. Second, sir, what is your overall analysis? सो बेसिकली पेपर वाज मेजरली ऑन द मॉडरेट लाइंस। तो जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था पेपर वैसे ही आया था। हमने सभी स्टूडेंट्स को गाइड किया था कि लास्ट 3 मंथ से करंट अफेयर्स को अच्छे से कवर करें, और पेपर उन्हीं लाइंस पर आया है। एंड अगर हम ओवरऑल देखा पेपर को, तो आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस, तो 23 क्वेश्चंस आपके बिल्कुल वन लाइनर बेस्ड थे। Okay, So that means they were majorly from the surface level of the news and quite on the easier lines. So काफ़ी डुएबल था पेपर, नॉर्मली जैसा आता है। एंड आई थिंक ये काफ़ी अच्छा रहेगा स्टूडेंट्स के लिए जो सेबी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, दैट यस दिस पेपर वाज रियली नाइस। कि अगर आपने 3 मंथ्स के करंट अफेयर्स को अच्छे से कवर किया था, डेफिनेटली दे वुड हैव इजीली स्कोर्ड अराउंड 15 to 18 मार्क्स इन द एग्जाम, बिकॉज इट right. वाज वेरी डुएबल इन नेचर। Hmm. Any questions which you can recall, sir, like any major questions? Yeah, definitely. See, as they have mentioned in the paper, in the notification itself कि कुछ फाइनेंशियल रिलेटेड न्यूज़ आर्टिकल्स आएंगे, तो वहाँ पर हमें काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिले एनबीएफसीज पर, ओएनडीसी पर। देन हमें कुछ एमओयूज के क्वेश्चंस देखने को मिले। एक जी20 समिट जो होने वाली है उसकी थीम क्या होगी, इसके ऊपर क्वेश्चन था। देन Right, वन क्वेश्चन फ्रॉम द रिपोर्ट। सो और एक इम्पॉर्टेंट चीज ये थी जो मेजर हाईलाइट थी कि स्कीम से कोई क्वेश्चन नहीं आया जनरल अवेयरनेस के अंदर, राइट? right, सो ये एक जैसा हमने स्टूडेंट्स को गाइड किया था स्टार्टिंग से कि स्कीम्स इज नॉट दैट रेलिवेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, द सेम थिंग हैज बीन फॉलोड। तो जिन्होंने इस चीज को फॉलो किया होगा, डेफिनेटली दे हैव डन वेरी वेल इन द टुडेज एग्जाम। right, right, right. So I think, sir, clearing phase 1, paper 1 cutoff would have not been a big challenge because quant is also doable, as Vishnu sir said. Narveer sir also said that English is also doable. Now you are saying GMA, maximum of the questions were one-liners only.
So Right. if somebody would have left completely reasoning, because Vishnu sir said reasoning is bit lengthy, so he or she would have cleared the cutoff easily for paper one, right? Definitely. And you and the student could have scored very high also, which could have helped that particular student to clear the overall cutoff also, right? Agree. Cool, cool, sir. Now, students, we will move ahead to Jaskaran, sir, who will help us in multiple other subjects. But before I move ahead, please remember that we have a detailed session coming up today on our YouTube channel itself at 6 p.m., wherein we will decode the entire phase one, paper one. And 1 hour later at 7 p.m., we will decode your IFSCA phase one, paper two as well. But this is just an initial reaction. अभी तक जो story रही है, paper one is doable. You could have scored easily 30 and above if you have studied carefully. Now allow me to move ahead to Jaskaran sir. Jaskaran sir, I need inputs first of all for economics. How is the overall paper for economics? Yes, sir. I would say eight questions were asked from economics, 7 to 8 questions were there, and paper was on the lines of PFRDA exam only. The difficulty level was almost similar. I would say easy to moderate. And over here, as far as the questions I have got from the students, so out of 8 questions, 3 questions were from core economics, like from LM curve, then market Okay, demand curve. One another question was there regarding investment multiplier. But right. apart from these 3 questions, rest of the questions that were there, they were pretty much straightforward and they were easily. I would say one could have attempted them easily. For example, one question was from national income. Then they had asked very simple question from sustainable development goal, and Okay, surprisingly, this question they had asked in 2023 also. Sorry, in okay. 2024 also. So So they have last year also repeated they had it. asked this question, and this year also they have repeated this question. So this shows that PYQs are extremely important. Apart Right, from that, one question has been asked from IMF, and again, it was an easy one. right. So in economics, out of 7 to 8, as per the analysis which you have given, 5 to 6 question looks easy or Yes, doable, I yes, should say. definitely. And some questions are on moderate to tougher side. Right? Yes. Now, sir, talk to me regarding finance because you are a teacher of finance also. Finance कैसा देखने को रहा है आपके लिए? Sir, finance also, students have told me that it was a moderate level and questions were one-liner questions only. They were one-liner questions, and I would say finance was easier as compared to economics. In economics, we can see some tricky questions also. Right, right. And hello, I think due to some issue, Vishnu, Jaskaran sir has left. Hello, Jaskaran sir, am I audible? Yes, sorry, there was some Yes, network yes. interruption. I Not was an saying issue. that if I talk about finance, finance was a bit easier as compared to economics, and questions were pretty much straightforward, one-liner questions only. For example, one question was regarding NPCI, IMPS, then inclusion index was asked as a part of finance. Then they had asked question regarding the difference between payment bank and the traditional bank. Then one question was from monetary policy. So you can Okay, categorize this question in economics part also. For example, the question was asked from open market operations. Then derivative question was asked, and it was a very straightforward question कि derivative की value कहाँ से derive होती है. So underlying asset. yeah, Okay. very straightforward question was there. Hmm. Then a question was there from financial risk management regarding interest rate risk, and one question was from public-private partnership also, which was regarding the role of project sponsoring authority. So I Okay. would say, apart from just 1 to 2 questions, rest of the questions were doable. In finance also. Yes, in finance also. So overall, if we see economics and finance, majority of the stuff looks doable right now, right? जिसने Yes, पढ़ा it's उसके लिए looks doable है. doable. Right. And any other comments which you would like to add over here, sir? Yes, all I would like to say is that basically, even if the paper seems to be easy, but I don't know if the options were straightforward or Yes, they were yes, tricky. So I'm yes. assuming that students have not committed a lot of silly mistakes while dealing with these questions. But I would say largely it was a doable exam. If you are Right, prepared diligently, if you are somebody who was mm, preparing for PFRDA also, you were in the flow and you are prepared for IFSCA. So I would say to a huge extent it was doable. right. Well said, sir. Now, if we see, as per the analysis which we have got from multiple faculties, paper one was doable. Paper two till now looks doable, but some of the students have told us that there were some lengthy questions also, some confusing questions also, which have come from management, costing, and accounts. Like I will give you a brief analysis of management. I have talked to 3 students till now, and they have told to me that there were some unconventional questions. Now, I don't know what unconventional questions were there, but that student was telling to me that options were kind of confusing. The statements were very, very big. So on that basis,
management, which generally comes easy, I am putting it under the heading of moderate. But if you see the questions, they are kind of journal in nature, but the tweaking has been done so that the question becomes tough. For example, they are asking you certain questions related to ERP, enterprise resource planning. They are also asking you questions related to what is premises in planning. They are asking you questions related to primary task of leader. They are asking questions related to leave-in leadership and whatnot. So questions, if you see, they are on expected lines only, like you have motivation, communication, leadership, journal management, and HRD, plus corporate governance. So आया तो paper इनमें से ही है, but they have just tweaked the questions to make it a bit more confusing. But seeing that the questions are on expected lines, I am putting this particular component as moderate. Why moderate and not easy? Because questions are tweaked a bit to make it difficult, right? Now, if I go for costing and commerce and accounts, now initially what review I have got from student is costing and accounts has been moderate to tough. Hardly any question has been there which looks easy in costing and accounts. So till now, whatever inputs we have got from the sample size of the students which we have talked, costings look tough. Commerce and accounts is also tough. Like some questions in commerce and account which I would like to tell you, ratios में से भर भर के question आए. Ratios में से they have asked you question related to capital gearing ratio. They have asked you question related to proprietary ratio, and there was some question wherein you have to calculate the investment equivalent something kind of stuff. Like we are still collecting questions, but if I analyze the overall 5 to 6 questions which I have got, the paper looks moderate to tough for costing and for commerce and accounts as well. For costing, they are not asking you any direct questions which we have seen in PFRD phase 1. But in IFSC phase 1, they have turned the tables and they are asking you questions related to some variance, business process, BPR and and your PI, that is your innovation, right? So they are asking questions you from this particular topic as well. They are asking some like full form based questions wherein they have given you the full form of DMIAC, and now you have to identify that what does D stands in it. So overall, yes, some questions can be, you can categorize them as moderate, but overall for accounts and costing, the paper looks moderate to tough. For management, it's moderate. And when it comes to economics and finance, it still looks tough. It still looks doable, not tough, right? So please, my friends, you just have to understand over here that paper one with the cutoff was 30. In paper two, you just need to get 40. So if you just do the easy, moderate kind of questions, you could have still got, you still have crossed the cutoff, and you could have moved ahead to the phase two. So we will be bringing a detailed session. Don't worry for that. Stay tuned to our channel. And I can see some comments are saying, sir, आपकी videos में से बहुत questions आए थे. Jaskaran sir, this comment is for you. So you have done some good work. Right. Cool. Please share your attempts with us. If you have any analysis, do share with us on the uh, on the chat box. Right. So that's the end from my end. Have a great day ahead. But we will be moving ahead towards the second session now, wherein we will bring a detailed analysis for paper one and for paper two. So if I conclude everything, paper one doable to moderate, you can say you could have easily cleared 30 marks. For paper two, it is kind of moderate to tough because questions were kind of confusing. But from finance and from economics, questions are still doable. So अगर आपको 40 marks लाने paper two में, and you also need overall cutoff of 80 marks, right? So that can be done from those easy questions. So that's the end of our today's analysis. Thank you so much. We will be coming ahead with greater analysis ahead. In today, we have a session at 6 p.m. and 7 p.m. also. So stay tuned. You will get the exact answer key very soon. Bye bye. Have a great day.